Now, find the least number by which 23328 should be multiplied, divide, and decrease to make it a perfect square. So first understand this number 23328. So you can find the factors of this number 11664. You can find the factor of this number 5832. You can find the factor of this number 2916. Because you want to understand this number, the best way to understand the number is to find its factor. Okay, you find it factor 1458 divided by 2. So you find the factor. If you divide by 6, then if you divide by 6, what you will get? 243, right? Then you divide by 3, you'll get 81. Divide by 3, 27. Divide by 3, you'll get 9. Divide by 3, you'll get 3, and then this one. So ultimately, I can write this number 23328 as 2 to the power 5 into 3 to the power 6. So 1 minute. Yes, you can continue. I'll just be on mute 1 minute. Yeah, sir. So 23328 is actually this. 23328 is actually this. Okay, 2 to the power of 5 into 3 to the power of 6. What can I multiply with this so that it become a perfect square? Very simple. For perfect square, what you need? For perfect square, your power should be even. Yes, sir. Power is even, then it's a perfect square. Okay, so what can you multiply with this so that it becomes a perfect square? So 2 into 2, another 2 we can add. If we add another 2, so if we add another 2 into this, so if we add another 2 into this, it will become 2 to the power 6 into 3 to the power 6. And this is a perfect square. Can you understand this? So what should you multiply? Sir. You should multiply it by 2. If you multiply it by 2, it becomes a perfect square. Clear? Yes, sir. Then the least number. What should you divide so that it becomes a perfect square? By 1? What should you divide this number? What should you divide this number? By what number can I divide this number so that it becomes perfect square? I want to make a perfect square. Minimum number. What should the least number? So I'm not sure. Why you're not sure, yaar? How will you make it perfect square? Yeah, by dividing. Divide this by anything. 2 to the power 5, 2 to the power 5, 2 to the power 5 into 3 to the power 6. Tell me the smallest number which you can divide it so that it become a perfect square. What you can divide? What you can divide? 2 to the power 5 by 3 to the power 6 divided by something so that it become perfect square. By 2 to the power of 4 into 3 to the power of 5. 3 to the power 5, 3 to the power 5 is not a perfect square, no? Or 3 to the power of 4, 2 to the power of 5. You divide by that much big number. They're asking you this least number. You're dividing 2 to the power something you're dividing here. What should you divide? If you divide this number by 2, it becomes 2 to the power 4 into 3 to the power 6. Again, it's a perfect square. If you divide it by 2, it becomes a perfect square. Simple. If you divide it by 2, again your power becomes even. When the number is a perfect square, when your powers are even, if you divide it again by 2, it becomes a perfect square. Simple. Okay, sir.
Then the third part of the question, and what should you decrease? So I have to decrease this so that it becomes perfect square. Whenever they ask you to decrease or increase, then you have to find the square root. 23328. For the square root, what you will do, you'll make pair, right? Yeah, sir. So you make pair. So 1 1 1, this will be 2, 1 1s are 1, 133. So it will go by what? 2 5s are. So 24 into 4, 90, 25 into 5 is 125. So 125, 6 will be bigger number. So this will be 30, this will be 125. So this will be 8 za, 828. Then 30, 2 za, 302. 04. Then 303, 909. So it go by 2. It go by 2. So it will go by 2. It will go by 2. Now it is going by 2. Okay, it is going by 2. Okay, it is going by 2. So you decrease, you have to decrease this. So this is 4 za, this is 4 za, this is 2, this is 224. Imagine if this number would be, imagine if this number would be 23328 minus 224. Imagine if this number would have been 23104, then this would have been perfect square. Can you understand this? Yes, sir. So by what number can you subtract? So if you subtract by 224, this number would have been perfect square. Can you understand this? If I ask you add, how much, which number, how much you can add? So 224. so for adding you should need 909. It should be 909. This should be 909. So it should be 909. So what should you add? So 909 minus 828. So 828. So it should be 1. This should be 1. This is 8. You should add 81. If you add 81 to this number, then it become a perfect square of 153, and it become a perfect square. Then the number would have become 81. If you add on this, then the number become 23409. Then your number become 23409, and it is a square of 153, and it become perfect square. So if you adding, what can you add? 81. If you subtracting, what can you subtract? 224. Clear? Yes, sir. So can I take a pic of it? I have done it, but for my thing, after all zoom out कर सकते हो तो. एक मिनट. हाँ सर, एक मिनट. मैडम स्कूल गई, कॉलेज गई? नहीं सर, ये मेरे मामा का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है. हेलो, हाँ हाँ हाँ. she want to make the death certificate. So they went there. Yes. Then this. Morning 9 o'clock they went. Oh, is it? Okay. Yes, sir. Taken a pic. Okay. और सर वो सुबह का रिकॉर्डिंग आपने भेज दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं. So you do this question, example 5. ये कर लिया ना हमने सब? हमने कर लिया. एक मिनट. ये बताओ, example 7. Find the smallest perfect square divisible by 2, 3, 4 and 5. Sir, I have done this question 1 minute. I have the. Tell me how will you do this? So 1 second. Find the smallest perfect square. Which is divisible by 2, 4, 2, 3, 4 and 5. ये था क्या? हाँ. So can I tell you the steps? Tell me the steps.
So, sir, abhi we had the question is that we have to find the smallest square which can be divisible by 2, 3, 4, and 5. Correct, na? Mm-hmm. So, abhi if you take the LCM of 2, 3, 5, and 6, which is 30. 2, 3, 4 और 5 बोल रहे हैं. So, 2, 3, 5, and 6. 2, 3, Why 4. this is 2, 3, 4, 5? Oh, sorry, sir. Sorry. I got confused. Now, if you take an LCM of all these 2, 3, 4, 5, correct? So the LCM is 60. Okay. So to make it a perfect square, you have to multiply it by 3 into 5. So 60 into 3 into 5 will give you 90. So the answer would be the smallest perfect square which is divisible by 2, 3, 4, and 5 is 900. I hope it's correct. अभी मुझे याद है मैंने क्वेश्चन किया था ये. Sir, एक मिनट, I'll take a pic. Sir, can you come from the first page? Okay. ठीक है sir, छोड़ो. When we finish the class now, that time I'll take a pic of all the pages till where we have done. Okay. Yeah, okay, so this I understood. Okay. Tell me The this. whole the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of the hall is 1905. 1296. 1296. 1296. 1296 कौन सा टेबल में जाता है? ऐसे डिवाइड नाउ. तो ये so this I'm not sure. 1296 is 36 square. So 36 is the answer. No? That is what you have to do. Right? Okay, sir. Read the question, man. Why you not able to understand the part of question? Written in English, you know English very well. So why can't you understand? I'm worried about that part. Read the question. What is written in a hall? The number of rows is equal to number of columns in each row. If the capacity of hall is 1296, the number of row into number of column is equal to the sitting capacity, right? So Yes, sir. rows and columns will be sitting capacity. Means square of that is equal to 1296. Find the number of rows or columns in each row. That will be nothing but square root of 1296. Square root of 1296 is what? It is 36. Yes, sir. Do this ninth one. The least number that must be subtracted from 7950 to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. Okay. So what is the number which we have to do? So 7950. Also find the least number that will be subtracted from to get a perfect square. Subtracted. तो आंसर क्या, तो क्वेश्चन क्या है? 7950. आंसर मिल गया है. Answer. So I'm getting 29.
Why 29? So now, so when you subtract 7950 minus 7921, you get the answer as 7. You get the difference as 29. So when you subtract this, you get the answer 7921, which is a perfect square of 89. So I that's why I got the answer. If you, yeah, 89, correct? Yeah. Ha. Example 10, 11 दोनों देखें. Find the least number which should be added to 7587 to make a sum of perfect square. 7587. 7587. 7587. 7587. So you need to add 157 to make it a perfect square. समझ में आ रहा है ना? Do क्या this. sir? You understood, right? Yeah, sir. Do example 11. Find the greatest 5-digit number which is a perfect square. Also find its square root. Huh? Find the greatest 5-digit number. Greatest 5-digit number क्या? Greatest 5-digit number is 99999. Which should be a perfect square. वो perfect square होना चाहिए. Find the greatest 5-digit number which is a perfect square. Also find its square root. Sorry, I'm not sure how to do this. अरे थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर दिया तो आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. सिंपल करना है यार. अगर मैं ये पूछा होता बाय व्हाट नंबर शुड आई सब्ट्रैक्ट 9999 सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे करता? वही तो पूछ रहा है यार. हल्का सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, तुझे पता नहीं है. सोचता क्यों नहीं है तू क्वेश्चन करने को? वी आर डूइंग नो दिस अगेन द सेम थिंग वी आर डूइंग. यहाँ पे हल्का क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, यू गेट नर्वस. What should you subtract from 99999 so that it become a perfect square? Tell me. You are doing no question where you are adding, you are subtracting, and you are making it a perfect square. Yes, sir, I'll do it. हाँ. So I can do it as सर मुझे इधर एक डाउट है. सर अभी मैं if I do your method I have to group it ना. तो मैंने ग्रुप किया. I got first number as 9. So 9 is a perfect square of 3. Can I take 3 as a perfect square? हाँ, 3 से जाएगा, कट जाएगा 9. Then bring 99 down. 99 down. 6. 61. 620. 620.
620. 5 5 are 25. सर अगर आप 39999 माइनस 3756 करो तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या बोल रहा है? सर इफ यू सब्ट्रैक्ट 3756 from 59 you get the perfect square. Your number is 3, so 9999. How much should I subtract? 37. 3756. 3756. इतना बड़ा नंबर हाँ क्या बोलता है यार तनिष? हाईली डिसअपॉइंटेड। 9999 इतना क्वेश्चन किया हमने, फिर भी तू नहीं बना पाता यार। 3 ये 9 हो गया, कट गया, ये 6 आ गया, अब ये 1 से जाएगा। 61, ये 99 है, 1 से गया, ये 38, 3899। अब किससे जाएगा ये? 62, 4 से ट्राई किया, 16, ये कितना हो गया? 9, 8 9, ये हुआ 24, फिर 6 2 5 25, ये 12, 3 1 2 5, then 6 2 6 6, 36, 12 15, 3 7 5 6, then 7 से ट्राई कर, 6 2 7 7 49, 14 18 4 3, बड़ा sir, 1 second. ये You 6 से take 6 जाएगा। from you take 6. क्या करता है तनिष? थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आ जाता है तो ये तो बनता ही नहीं यार। अच्छा किया, वो सेम चीज है जो अभी तो पढ़ा रहा हूँ, देयर नथिंग डिफरेंट। 143 आ गया, अगर मैं इसको 143 से माइनस कर दूं तो इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। 999999 को अगर मैं 143 से माइनस कर दूं, अगर मैं इसको 143 से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो इट बिकम व्हाट? इट बिकम 5 है ना। सो 999999 माइनस 143, ये 6 5, ये हो गया 8, 99856। वो किसका स्क्वायर रूट होगा? 16 का स्क्वायर होगा, 316 का स्क्वायर होगा। हो गया। यही क्यों क्वेश्चन, तो यही चीज तू तब से बना रहा है यार। व्हाट इज द पॉइंट यार? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। डू दिस। The smallest perfect square. ये टेस्ट नहीं बनेगा। सेम लाइक व्हाट वी डिड, अभी सब्ट्रैक्ट किया, अब प्लस करेंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मैं कर रहा हूँ सर। हाँ कर, ठीक है।
कीजिए ना एक बार. I'm getting 31. अरे तो 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961. इट इज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यू वांट अ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, क्या होगा? 1024. 32 का स्क्वायर. दिस इज 3 3. दिस इज 6. 3 3 9. ये हो गया 100. अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा तो बड़ा, ये तो 1 से जा रहा है. 1 से जाएगा, ये कितना हो गया? 39 होगा. ये 39 होगा. हाँ 39. अब 39 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. मुझे 39 तो सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, मुझे तो 4-digit नंबर चाहिए. तो मतलब 31 का स्क्वायर तो स्मॉलेस्ट है. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे लास्ट 31 का स्क्वायर तो 3-digit हो गया लार्जेस्ट. मुझे तो स्मॉलेस्ट 4-digit चाहिए. तो मतलब मुझे 1024 चाहिए. तो 10,000 में क्या ऐड करूं? कि 24. 4 आ जाए. 24 ऐड करूंगा तो 1024 आ जाएगा, विच इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. Okay, sir. Start this exercise. So is it cube root भी है क्या? उसके बाद we'll do cube root. Now we are doing square root. So now should I do cube root sums? First to do square root properly. That is the problem with you. Without learning first thing, you jump to another thing. Whatever you are learning, learn it perfect. That matters the most. That's my responsibility. I'll do that for you. एटीन 11 का स्क्वायर क्या होता है यार? सर मैंने कर दिया. एक मिनट सर, एक मिनट. सर मैंने चारों सम्स कर दिया. हाँ बोलो. फर्स्ट वाला which is 1 second sir. First वाला का आंसर I'm getting 121 by 169. Second वाला 5832 by 1331. साइन नहीं दिख रहा तेरे को? माइनस साइन आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू. I told minus. You did not say a minus. Okay, minus 5832 by 1331. Third वाला 12.25. Fourth वाला 0.0064. क्या सर? रॉन्ग आंसर. 8 का क्यूब 64 होता है. Oh नहीं सर. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर गया है. वो देखो बस सॉल्व कर दीजिए. 1 मिनट. No. B 0.000512. Correct ठीक है. Oh God. Sir, answer I'm getting as 0.000512. Correct. Square root number 2, 256. 256.
I think 256 now. Okay. Two the 8, 8, 6, 15. सर ये थर्ड वाला कैसे करूं? I mean the fifth वाला. निकालना उसका वैल्यू, स्क्वायर रूट निकालना आता है ना तेरे को? Yeah, prime factorization, no? हाँ, तो doesn't matter. You'll do whatever way you do, you'll get the same answer. The answer will not change. Hey, sir, मुझे नहीं आ रहा. एक मिनट, let me just try 1 minute. You don't know prime factorization. I know. Sir, 421. गलत है. The fifth one, sir. Hello. हाँ, सेकेंड का फिफ्थ बोल रहा है ना. सेकेंड का फिफ्थ यू आर टेलिंग, राइट? हाँ. सेकेंड का फिफ्थ इज नॉट 421. So 1 minute, let me just do it again. पेंसिल भी ठीक नहीं है. एक मिनट सर. है ना, रखिए. हाँ जी, मना बोला है. सर एक मिनट, आई एम ऑलमोस्ट डन. Sir, I'm getting
So I got the answer for the second main. First one is 16 square. Hello. Then the second one is 18 square. Correct. Third one is 28 square. Fourth one is 84 square. Fifth one is 164 square. Fifth one is 164 square. गलत है. So sixth one is 245 square. That 164 square is wrong. Okay. Okay, sir. Sorry, sir. It is. Wait, one minute. Where have I gone wrong? So I think it's 421 square. Wrong. So 421 be wrong, yeah? Square root of 28224 वही है ना? नहीं, where have I gone wrong? Square root of 28224. So 164? 164 wrong है ना? सर आप चेक कीजिए ना, मुझे वही आंसर आ रहा है. 1 minute. So I think it's 164, 168. Yeah, 168 is the answer. Okay, sir. थर्ड वाला भी करना है? सब करना है. Okay, sir. 841 का, if I'm not wrong, it is 29. हाँ, 29 squares. Second 324. 324 का ये है ना? नहीं. 2304. Okay. 23. Okay, 39204. यार कैसे करना ये? Maybe. Sir, fifth wala, fourth wala is 55225. 5 से factors को 11405. 5 again. 2. Sir, 1 minute. 55225 divided by 5. 11405, which is divided by 5 is
2209 इधर अभी 21 10 99 7 7 से जाएगा क्या 14 डिवाइडेड बाय 7 नहीं डिवाइडेड बाय 3 भी नहीं जाएगा यार कैसे अटक गया Sir, I'm not getting 4 5 6 क्या Hello? करना है? हाँ, 55225, you don't know how to find the square root? तो मुझे आंसर आ रहा ही नहीं है इसलिए क्या है 841 का स्क्वायर रूट? I think it's 29 देन 2304 का स्क्वायर रूट? 48 48. 39204 का स्क्वायर रूट? 198 सही है. देन फिर 55225 का क्यों नहीं निकलेगा? तो पता नहीं सर Sir, can you do the rest 3? I will do, but why you are not doing? I'm worried about that part. Five five two two five. 55225. You have this 55225. 5522. Sir, can you do this of prime factorization? Any method you can do. Yeah. Sir, can you do this for prime factorization? What is the big deal in that? 55225. 55225 divided by 5. You'll get 11045. Then Oh divided. yeah, then 5. Then 2209. 2209 is what? 49 square. 47 square. 2209 is 47 square. Okay, sir. 2209 is 47 square, right? Yeah. 9. 3 square 09, and then 47 minus 3 44. Yeah. Then done. So 255 is basically 5 square into 47 square. So what is the square root of that? Square root of this is 5 into 47. That is 5 35, 3 carry 235. That is your answer. If you do square root like this, you'll get the same answer. Okay, sir. Did you understand? Yes. Okay. Can you do the other two? Huh? 177 को कैसे करना 177241 I'll take as 2 886 है 241 2 से जाएगा भाई. यही मैथ्स पढ़ रहा है तू. ऑड नंबर 2 से जाता है. नहीं सर क्या हो गया भाई तनिष्क, तेरे को दिमाग सब यूज करना बंद कर दिया अब तू, लग रहा है. I'll use 3 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है तनिष्क? यू डोंट नो डिविजिबिलिटी रूल एंड ऑल? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? Because I have to go by 7 अरे बता ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? So the last number should be divisible last two numbers should be divisible by 3 दैट इज जो तू बोल रहा है 4 का बोल रहा है डिविजिबिलिटी रूल. लास्ट 2 डिजिट भी डिविजिबल बाय 4. दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. ये सब भी नहीं पता है, तेरी मम्मी को मैसेज करूंगा. यू डोंट नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3. No sir क्या होता है? द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3.
ओके। हाँ सर, करना कैसे करूँ, कैसे करूँ? सर मुझे डेसिमल आ रहा है। The perfect square. So I don't know where I'm landing. सर मुझे ये नहीं आ रहा है। 1 minute. क्या है? 177241. 177241. 1177241. किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर है. ऑड नंबर, इवन नंबर, यू नो राइट. यस सर। 3 से जाएगा क्या? सम ऑफ डिजिट करो. 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18, 18 + 4 22. नहीं जाएगा 3 से. ठीक है. 4 से तो जाएगा नहीं, ऑड नंबर है. 5 से तो जाएगा नहीं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट डिजिट भी 0 और 5. 6 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर है. 7 से जाएगा क्या? 7 2 ज़ा 14, 37, 5 ज़ा 35, 22, 14. नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. 11 से जाएगा क्या? 11 1 ज़ा 11, 67, 12, 1 14, 14 11 31. नहीं जाएगा. ठीक है. 13 से जाएगा क्या? 13, 13 से जाएगा क्या? 13 1 ज़ा 13. तो नहीं सर। 17 - 13 क्या होता है? 4. 47 47, 39, 13 47 30 मतलब 82. 82 मतलब 82 मतलब 44. 44 मतलब 51. नहीं जाएगा. 17 से जाएगा क्या? 17 से नहीं सर। 177241. 17 से जाएगा. 17 1 ज़ा 17, फिर 17
2 0 72 17 4 जा 68 68 44 44 2 जा 34 101 नहीं जाएगा 70 से 19 से जाएगा क्या 177 241 19 से जाएगा क्या 19 अच्छा 19 9 जा 19 9 जा क्या होता है 171 होता है राइट 19 हाँ सर 171 तो ये हो गया 62 19 3 जा 57 57 मतलब ये हो गया 54 फिर 54 फिर 2 जा 38 38 38 ये हो गया 161 नहीं जाएगा 19 से भी अच्छा 20 से भी नहीं जाएगा सर 23 से चेक कर लिया 23 आई 177 डाउट 241 23 23 5 जा क्या होता है 23 5 जा 25 से नहीं तो नहीं छोटा ही आएगा 7 जा 161 7 जा करेगा तो 161 8 जा बड़ा नंबर आ जाएगा तो 8 जा फिर 183 तो 7 से जाएगा 161 ये हो गया 162 फिर 7 से गया 161 फिर ये हो गया 14 फिर 141 3 के टेबल में 23 के टेबल में 141 आएगा क्या नहीं आएगा 161 आता है 141 नहीं आता 23 से भी नहीं जाएगा 23 से नहीं जाएगा फिर किससे जाएगा 29 से चेक करो 29 से जाएगा क्या 29 से भी नहीं जाएगा 29 से भी नहीं जाएगा क्यों तो 29 से नहीं जाएगा चेक कर लो 29 से जाएगा क्या 29 थ्री जा 87 होता है 29 फोर जा 29 फाइव जा बड़ा आ जाएगा 29 नहीं छोटा ही आएगा 29 सिक्स जा 54 5 12 12 प्लस 174 6 से जा रहा है कितना 174 सर आई डोंट थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर no it's a perfect square it is given so it is a perfect square so 29 6 जा 29 6 is 54 12 plus 5 12 plus 5 कितना होगा 174 12 plus 5 क्या होगा 174 अगर ये 174 है तो ये कितना हो जाएगा 174 ये हो जाएगा 32 ये हो गया 1 से 29 9 9 29 ये हो गया 34 34 फिर 1 से 29 29 ये हो गया 51 फिर नहीं जाएगा 29 से भी नहीं गया फिर किससे जाएगा 31 से जाएगा 177 241 ये तो बहुत कम्बरसम एक्सरसाइज हो गया है थिंक अबाउट दिस सर आई डाउट एक मिनट लेट मी जस्ट चेक विथ कैलकुलेटर सर बिकॉज़ आई डोंट थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर आई डाउट so we can find the other way क्या नंबर है 177241 राइट Yeah. 177241 ये गया 4 से 172 ये हो गया 8 83 तो बड़ा नंबर आ जाएगा 2 से गया 164 164 ये हो गया 8 देन 841 यार 421 it's a square it's a square 421 square 17724 is 421 is a perfect square is a prime number or not 421 so 21 ये 5 4 2 6 7 7 11 11 33 9 नहीं जाता 13 13 31 नहीं जाता 17 17
17 17 17 17 17 17 से जाता है 17 34 81 नहीं जाएगा 19 19 19 38 38 41 नहीं जाता 21 421 इज अ प्राइम नंबर इट्स अ प्राइम नंबर स्क्वायर इसलिए हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे actually this is actually 421 square and 421 is a prime number तो डिवीजन मेथड से करना नामुमकिन है उसको ऐसे करके then would have found this then this 2425104 ये तो कर सकते हैं तो इजी है can you do this 425104 425104 425104 टू से गया ये हो गया 21 ये हो गया 21 ये हो गया 2552 फिर 2 से गया ये हो गया 1062 फिर 2 से गया 53138 फिर 2 से गया 2415619 अब ये 3 से जाएगा क्या 25 16 19 नहीं जाएगा 3 से फिर 7 से जाएगा क्या 21 55 55 55 55 66 39 नहीं जाएगा स्क्वायर रूट निकाल के देख लो 425104 अपने को हिंट मिल जाएगा 6 से गया 12 ये हो गया 36 ये हो गया 651 मतलब 2 से छुटाएगा 3 से 123 3 जा क्या होगा 123 3 जा क्या होगा 369 तो 25 5 जा तो बड़ा आ जाएगा 5 जा 25 2 12 1 625 5 से जाएगा 625 130 ये हो गया 625 ये हो गया 6 ये हो गया ठीक है 2604 ये 2 से जाएगा 652 का है 652 का स्क्वायर है 652 का स्क्वायर है 652 का स्क्वायर है मतलब 652 इंटू 652 652 का फैक्टर्स निकालूं मैं 652 का फैक्टर्स निकालूं मैं तो ये 2 से गया 326 फिर 2 से गया ये हो गया 168 फिर 2 से गया ये हो गया 84 फिर 2 से गया ये हो गया 42 फिर 2 से गया ये हो गया 21 फिर 7 से जाएगा ये नंबर 7 से जाना चाहिए फिर 2 6 5 6 9 7 से 7 3 जा 21 ये हो गया 55 फिर 7 जा 49 ये हो गया 66 7 9 जा 7 9 जा 63 होता है ना तो 39 3 से नहीं आ रहा कैलकुलेशन मिस्टेक है 425104 डिवाइड बाय 2 करेगा तो 212552 आता है ना 425104 I think that's a prime number. 1 minute don't be too confusing so so 4425104 if I divide by 2 So I think 652 is correct for 42504. then divide by 2 I'll get 106276 then divide by 53138 divide by 2 26569 7 से नहीं जा रहा फिर 11 से जाएगा क्या 11 से 20 11 से 22 45 16 59 नहीं जाएगा 13 से जाएगा क्या 13 से 13 Sir, I can't see your cursor. सॉरी आपका स्क्रीन फ्रोज हो गया है. मे बी योर इंटरनेट लिटिल बिट स्लो चेक करेगा So maybe, sir, आप एक काम कीजिए, just stop presenting and representing it. anyway so Easy. this number is 52 square याद रखना ठीक है सर.
number is 652 square. You can remember 652 square 425104. 652 divided by 2. 652 divided by 2. 326 divided by 2. 163 divided by 7. 7 से नहीं जा रहा ना. 163 किससे जाएगा? एक मिनट ना. 163 किससे जाएगा? 163 किससे जाएगा? 163 7 से तो नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा क्या? 13 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, 19 की टेबल में नहीं आता है. 163 मेरा प्राइम नंबर है. 163 इज अ प्राइम नंबर. 163 इज अ प्राइम नंबर. लोग घुसा देंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते. 163 घुसा दिए, प्राइम नंबर है. 163 यहाँ पे प्राइम नंबर है. अब यही प्रॉब्लम हो रहा है. 163 से जाएगा, ये 163 प्राइम नंबर है. अब ये सपना थोड़ी आएगा किसी को. उल्टा करके आएगा. 163 12656 9, ये 163 से जाएगा. 163 2 6 12 326 326 सेकेंड. 6 12 326, तो एक से जाएगा. 163 मेरे 163 आएगा क्या? 163 का स्क्वायर ही मेरे ख्याल से ये होता है, तो ये 163. ठीक है. फिर 163 का स्क्वायर ही है मेरे ख्याल से. 150 प्लस 13 का स्क्वायर होता है 69. 1 कैरी. 163 प्लस 13 176 into 3/2 into 3/2. This is 88 into 3 264. हाँ सही है. 160 ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. This is the prime factorization. 425,104 is actually 2 to the power 4 into 163 square. The square root of 425,104 is 2 square into 163. Means 163 fours are 12 25 2 carry 652. Okay, so then I'll try doing it for myself. You can send me the photo. Okay, I'll send you the photo. Remaining question you try doing by yourself. Okay, Yes, sir. I'll see you then. So tomorrow कल कितने बजे है class? You do this. I'll see you at 7:30 in evening. Finish this Sir, so that we'll discuss sir, at 7:30 today. sir, can we do it tomorrow? No tomorrow. Sir, because I have to complete my other assignments also. No problem. Do it after that. First finish. I'll see you at 7:30 in evening. Okay, sir.